So hi everyone, welcome to the channel. आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम Irodov that is 3.3. It is from the part 3 of Irodov that is electrodynamics, right? अब जनरली स्टूडेंट्स को Irodov के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये आती है कि वो क्वेश्चन का मतलब तो समझ जाते हैं, क्या हो रहा है सिचुएशन वो भी समझ जाते हैं, बट दे डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट. So today we'll try to crack that intuition, right? So let's jump to the question, okay? So let's draw the figure. What's being said in the question? Two small equally charged spheres, right? So each of mass m are suspended from the same point by silk thread of length. पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपन. दो स्फीयर्स हैं m मास के, राइट? ये एक पॉइंट से सस्पेंडेड है, राइट? नाउ दे हैव गिवन अस कि थ्रेड की जो लेंथ है वो l है और इन दोनों स्फीयर्स के बीच के इनिशियल डिस्टेंस है x, राइट? और एक और इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि x जो है वो मच मच लेस देन है l. इसका काफ़ी यूज़ आएगा, अभी हम कैलकुलेशंस करेंगे उस, राइट? व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड इज we have to find the rate of change of charge with respect to time, right? Find the rate dq by dt with which the charge leaks off each sphere if their approach velocity varies as v is equal to a by root x, where a is a constant. So we have been given that v is equal to a upon. अब एक बार सिचुएशन को दोबारा समझते हैं कि यार जब ये पूरा सिस्टम जो है रेस्ट पे है, राइट? जब कोई भी चार्ज लीक नहीं हो रहा है तब क्या हो रहा होगा, है ना? तो उस मोमेंट में हम देख सकते हैं कि यार क्योंकि ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर्स हैं तो एक दूसरे पे ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे अपोजिट डायरेक्शंस में, राइट? एफ आई शुड से एफ, राइट? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके. और दोनों ही के ऊपर क्योंकि एक वर्टिकल फ्रेम में है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा एम जी, ठीक है? तो स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि यार सिस्टम तो जो है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंग का टेंशन है और डाउनवर्ड फोर्स एम जी है, लेफ्टवर्ड एफ ई है. तो कुछ इस तरह का इक्विलिब्रियम में एक सिस्टम है. अब हो क्या रहा है कि धीरे धीरे दोनों ही स्फीयर्स में से चार्ज लीक होना शुरू होता है, ठीक है? कि भाई पहले सेकंड में डी क्यू निकला, दूसरे सेकंड में फिर डी क्यू, ऐसे ऐसे कर करके लीक हो रहा है. अब ऑब्वियसली बात है कि हमें पता है कि यार फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स वो क्या होता है? ए इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दैम, राइट? तो यहाँ पे अगर दोनों ही चार्जेस कम होंगे तो ये फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कम होगा, राइट? चार्जेस का अगर मैग्नीट्यूड कम होता है फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कम होगा. और अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो ये दोनों पास आएंगे, राइट? दे विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, है ना? ऐसे. तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और वही वेलोसिटी यहाँ पे उन्होंने दे रखी है, दैट इज a अपॉन रूट एक्स. नाउ आवर गोल इज टू फाइंड द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है? अब किसी भी चीज़ का टाइम के साथ चेंज निकालने से पहले हमें उसका रिलेशन चाहिए विद अदर वेरिएबल क्वांटिटीज, राइट? तो यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटीज क्या है? ऑब्वियसली एक तो टाइम है, ठीक है? टाइम वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, राइट? दोनों के बीच का डिस्टेंस और चार्ज. फंडामेंटली ये तीन चीज़ें वेरी कर रही हैं, ठीक है? तो हमें डी क्यू बाई डी टी निकालने के लिए चार्ज निकालना होगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? दोनों में से अगर कुछ भी एक मिल जाता है हमें तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं, राइट? दिस इज द इंट्यूशन बिहाइंड सॉल्विंग द क्वेश्चन. अब ये इक्वेशन हमें मिलेगी कैसे? सो हमें इनिशियल सिचुएशन पता है जब ये इक्विलिब्रियम पे है, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वेरी ऑब्वियस थॉट कि हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, राइट? तो इसके लिए लेट्स मूव टू द डायग्राम अगेन. यहाँ पे मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ या सेंटर एक्सिस. यहाँ पे इस एंगल को नाम दे देता हूँ थीटा, राइट? नाउ इफ दिस एंगल इज थीटा then this angle will also be theta. अब टेंशन को हम रिजॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में. सो टेंशन विल बी the horizontal component will be t sin theta and the vertical component will be t cos theta. Now simply let's balance the forces. Balancing the forces.
पहले वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे हम, जहाँ पे टी कॉस थीटा जो है वो बराबर होगा एम जी के, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू एफ बी. Now, I think after this point I would encourage you all कि आप ये क्वेश्चन खुद से अप्रोच करें, खुद से सॉल्व करें, राइट. काफ़ी कुछ तो मैं बता ही चुका हूँ, एंड स्टिल अगर आप आंसर तक नहीं पहुँच पाते देन यू शुड कंटिन्यू वाचिंग द वीडियो. ओके ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दीज इक्वेशंस. Let's divide both the equations, right? 1 so 2, equation 2 divided by equation 1. So what we will get is t sin theta divided by t cos theta equal to fe. What will the value of fe? We'll put in the next step. Okay. Tan theta, right? Sin upon cos will be 10, and fe will be k q q, right? दोनों charges की magnitude q है, and the distance between them is x square, right? Divided by mg. Let's further simplify it. Tan theta is equal to k q square upon mg x square. Now tan theta की हमें एक वैल्यू तो यहाँ से मिली, राइट. नाउ लेट्स गो बैक टू द डायग्राम. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कुछ लेंथ्स दी हुई हैं, राइट. क्या लेंथ्स पता है हमें? हमें ये लेंथ पता है, हमें लेंथ पता है, राइट. हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? विद दिस राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन फाइंड आउट this vertical, right? Or I should say from the perspective of theta, this is the base, right? So its value, I think I should draw the triangle. Okay. So what we know is this length is x by 2, this length is L. So from Pythagoras theorem, we can easily write this length will be x square minus x by 2 whole square. Okay. Now, and this angle was theta. So from this, tan theta will be, that is perpendicular upon this, x by 2 divided by under root L square minus x by 2 whole square. Now, with the fact that we know that this was given in the question, x is very less than L. So क्योंकि x काफी छोटा है, we can ignore this term, right? This will be tending to 0 in front of L. So tan theta will directly become x upon 2L. We have two equations of tan theta. This one, let's say this is third equation, and this is fourth equation. So we can equate both of their RHS, that is the right hand side. It will become from equation 3 and 4, a q square upon mg square is equal to x upon 2, right? यहाँ से हम q के लिए सॉल्व कर लेते हैं, right? We need a equation of q in terms of x. So q square will be equal to mg x cube upon k into 2l. अच्छा, k की वैल्यू हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो k की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं यहाँ पर. k so q will be equal to under root of mg x cube 1 upon 4 pi epsilon naught into 2l. Okay, let's simplify it further. This whole will be cancelled out by 2. So what we can write is mg into 2 pi epsilon naught into x cube upon L. Right, I think no other term is in the denominator. Okay, so finally it will become under root. Let's take out this x cube out of the under root, right? So let's keep all the other terms like that only. Mg upon L into x to the power 3 by 2.
what I've done is I've written under root as half, right? So it will become 3 plus 1 by 2. Okay, this this thing here. Oh, not 3 plus 1 by 2. Sorry, it's 3 into 1 by 2. Okay. Now we have a equation of q in terms of x. Now we can simply do what we needed, dq by dt, right? So we can differentiate the equation with respect to t, that is with respect to time. So will get dq by dt is equal to, this whole term is constant, right? So it won't get changed. G from L, this will become 3 by 2 x to the power 3 by 2 minus 1, right? That is equivalent to 2 pi epsilon naught G to L 3 by 2 x to the power half. Okay, and by chain rule we know that we have differentiated with respect to x, so here will come dx by dt into dx by dt, right? So what we have been given is velocity was a upon root x. We can also write velocity as dx by dt, that is the rate of change of displacement with respect to time. Okay, so directly it will become dq by dt is equal to 3 by 2. We will put this value of dx by dt in the in this equation, right? So it will become 3 by 2 into 2 pi epsilon naught mg upon L into root x into a upon root x. I can cancel out this root x with root x, right? So finally हमें क्या मिल गया है, dq by dt is equal to 3 by 2 a under root 2 pi epsilon naught mg upon L, right? So ये हमारा final answer है. If you have any other questions regarding this problem, you can ask in the comment section. For now, thanks for watching. Like the video, share it with your friends who are also preparing for JEE mains and advanced. And this question was very relevant for both the examinations, I think. If NTA decides to make a difficult paper this year, so they will put it in mains. And if IIT wants to keep a little bit easier side physics section, so they will put this question in both. So in both the ways, this question is very relevant for both the examinations. So I think the concepts which are involved here are clear to you. Thank you so much for watching.